in F block elements. Okay, general characteristic in the sense the physical property, such as you have melting point, boiling points, density, enthalpy of atomization, enthalpy of ionization. These are the general properties. And then from F block element, what are you going to be asked? You are going to be asked mainly about what are the difference between lanthanides and actinides in terms of their electronic configuration, oxidation state and chemical behavior. ठीक है, F block में आपके पास इसके अलावा एक सवाल जो आ सकता है, that is about lanthanide contraction. ठीक है, so always यहाँ पे क्यों दिया रहता है objectives? Because you read these points and जिस तरह से आपके पास एक particular point, जैसे for example electronic configuration आया किसी का, so you should give special attention because that is in the objective of this particular chapter. चलिए, the first question that can be asked in DNF block element is regarding transition metals or transition elements. What are transition elements? So transition elements are the element which have incomplete d orbitals either in neutral atom or in ionic state. ठीक है, तो दो कंडीशन है, किसी में से दोनों में से कोई एक भी फुलफिल हो जाए तो क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट. व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन नहीं, दो कंडीशन में से पहला कंडीशन क्या है? इट शुड बी न्यूट्रल एटम में आपके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिट, you should have the incomplete d orbitals either in the neutral atom or in the ionic state. If you have incomplete d orbitals in the neutral atom, then it is transition element. अगर न्यूट्रल में आपके पास incomplete d orbitals नहीं है, for example copper, if you look at copper 4s1 3d10, so this is having completely filled d orbitals. But copper 2 plus, it has 4s0 and 3d9. So copper 2 plus has incomplete electrons, has incomplete d orbitals in the ionic state. That is why it is a transition element. But if I take the case of zinc, this is 4s2 3d10, and zinc 2 plus is also 4s0 and 3d10. Now, elements like zinc, Cd, and Hg, all of these, they do not have incomplete d orbitals either in neutral atom or in ionic state. That is why these are not a transition element. These are not transition metals. Okay, first thing is that incomplete d orbitals का मतलब है transition element either in neutral or in ionic state. But if you have complete d orbitals in both neutral and ionic state, then it is not going to be a transition element. ठीक है, right? Next आप लोग sorry लिखिएगा नहीं कुछ यहाँ पे अभी. Next thing is the electronic configuration of the d block elements. In general, the electronic configuration of d block element is ns and n-1d. S can have 1 to 2 electrons and D can have 1 to 10 electrons. This is the general electronic configuration of the D block element. What is N here? N is the outermost shell. N is the outermost shell, and NS means the S subshell will be of outermost shell, and उससे एक कम shell number का आपके पास क्या होगा? D subshell होगा. Okay. Important electronic configuration that you have to remember is chromium. Chromium will be what? Argon 4s1 3d5, and chromium 1 will be argon 4s0 3d5. उसी तरह से आपके पास क्या है? Copper, it is also argon 4s1 3d10 and copper plus argon 4s0 3d10. ठीक है ना? These are important electronic configuration that you should remember. क्या ध्यान रखने का है? क्यों? Because both of these are exceptions.
because here we are not filling the 4s electron completely, rather we are going to fill the 3d electrons. In chromium के case में, in chromium we are filling the 3d electrons in half filled 3d. In copper we have completely filled 3d. That is why those configurations are more stable. ठीक है ना? So why do we have copper 4s1 3d5 and not 4s2 3d4? Because 3d5 is more stable. That is there in your electronic configuration. General electronic configuration is important here. Now please, next thing. See this question: on what ground can you say that scandium is a transition element but zinc is not? In scandium we have 4s2 3d1, okay, but in zinc we don't have. We have complete d orbitals in both ionic state and neutral state. That is why we cannot say zinc is a, we cannot say zinc is what, it is a transition element. Now moving on to the physical properties. Physical properties में first of all we are going to look at the melting point and the boiling points. Okay, melting point and the boiling points. Now melting point and boiling point, they mainly depend on what? Interatomic forces. Now, interatomic forces in metals are what? Metallic bond. Metallic bond क्या होता है? You have positive, positive, positive. These are the atoms. Okay, these are the nuclei of different atoms. और इस तरह से आपके पास we have sea of electrons like this, sea of free electrons. Okay, not paired electrons. We have unpaired electrons which are moving freely in a sea of positively charged nuclei. So what is metallic bond dependent on? It is dependent on unpaired electron. If you have high unpaired electron, then you will have more interatomic forces and high melting point and boiling point. Is this clear? Yes or no? Please tell me. Yes. Okay. Now, but in the case of, but when you have completely in D5, ठीक है, please listen. D5 में क्या होता है? In D5, the D subshell is half filled and stable configuration. ठीक है, and it is what? It is stable configuration. अच्छा, अगर मान लीजिए if you have to move the electrons here and there, है ना? Because we have different electrons and these electrons are freely moving, that is why we have more strength of metallic bond. But in D5 we have what? Stable configuration. अच्छा, अब अगर D5 में stable configuration है तो D5 को ये छेड़खानी करने नहीं देगा. Okay, so D5 cannot be disturbed. Why D5 cannot be disturbed? Because it has stable electronic configuration. D5 is half filled, which is stable electronic configuration. And if D5 cannot be disturbed, इसका मतलब क्या होगा? That means it cannot move freely and participate in metallic bond. ठीक है, इसी वजह से क्या होता है आपके पास? You see here, manganese का lower है because it is having D5. Okay, similarly what you have technetium which is having lower which is having what? Which is having a lower melting point. ठीक है,
हाँ अच्छा अनदर थिंग दैट इज मेल्टिंग में पॉइंट में क्या होता है, यू आर गोइंग फ्रॉम सॉलिड टू liquid, and there is another thing when you go from solid to gas, and that is known as delta H atomization. ठीक है, delta H atomization, for example you have metals such as zinc. Now zinc solid से you have to make zinc gas, and as soon as you will make zinc gas you will get zinc atom individual atoms, because what is gaseous state? In gaseous state one atom is not affected by another atom, all the atoms are independent to each other. So this is sublimation also, and this is also atomization. But if I look at atomization of non-metals such as chlorine, chlorine 2 is what already gaseous, Cl2 is already gaseous. Now if I am going to atomize it, then I'm going to get two chlorine, two individual chlorine in gaseous form. But metal की case में zinc solid से again zinc gas, this is delta H atomization and also delta H sublimation, same thing है यहाँ पे metals के case में. Okay, now this will also be dependent on what interatomic forces, and since it is dependent on interatomic forces, it is going to be having similar trend as that of the melting point. So delta H atomization और melting point का क्या होता है, both have similar variation. Please remember that. Okay, melting point and delta H of atomization. Clear है सबको? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Next is variation in atomic sizes and of transition metal. Now, if I am going from scandium to zinc, then what is happening? Atomic number increases. ठीक है, क्या क्या चीजें हो रही है वो देख लीजिए आप. Number 1, atomic number increases, that is the proton charge will increase. Hi Anna, correct है guys? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Second thing that is increasing is number of electron. Number of electron in d subshell increases. ठीक है, number of electron in d subshell increases. Now if the d subshell had good shielding effect, that means if you are adding one electron, that electron is hindering and that electron is not letting other electrons get the positive charge from the protons. Okay, so that means it is having good shielding. But the most or the best shielding is by S subshell, then P subshell, then D subshell, and then F subshell. These have good shielding effect and these have poor shielding effect. And please write, due to poor shielding effect or screening effect, of D subshell, rather D electrons लिख लीजिए. Hence, the attraction between, देखिए प्रोटॉन तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन ये शील्ड नहीं कर पा रहा है ना. So if it cannot shield, that means proton is going to have a larger attraction. Hence, the attraction between protons and outermost electron, क्या होगा? प्रोटॉन का चार्ज बढ़ रहा है और ये शील्ड नहीं कर पाता तो इंक्रीज. Now when the attraction will increase, तो क्या होगा? Tell me guys, size will increase or decrease? Decrease. Size will decrease. Hence, therefore, size decreases. That means both the things, atomic radii का भी यही हाल है and ionic radii का भी यही हाल है, decreases. Is that clear? Yes or no, please tell me. Main important thing is what is written in blue. Due to poor shielding effect of d electron, hence the attraction between the proton या फिर nucleus भी लिख सकते हैं and the outermost electron increases, therefore size decreases. For both the cases, atomic radii and ionic radii, you are going to write the same thing. This is clear for everyone? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Why the size decreases as we go from scandium to zinc? Okay. By the way, scandium to zinc tak to nahi, scandium to nickel tak it
decreases, but after copper and zinc it increases because copper and zinc both have D10 configuration. D10 configuration की वजह से क्या होता है? There is a repulsion between the electrons. ठीक है, that's why it increases a bit after nickel. But generally speaking क्या trend है? Generally speaking it is decreasing only. Okay, now can we explain the other thing? इसको हटा दें हम? हाँ या ना बताइए? Yes, sir. Remove this part. Okay, now if I am going from 3D, 4D and 5D series, इस तरह से जा रहे हैं. If I am going down in a group, then what should happen? Tell me. Size यहाँ से यहाँ जाने में क्या होना चाहिए? Size increase, yes or no? Correct Yes, है? sir. Similar Yes, sir. increase, we should see similar increase. अच्छा ये lower नीचे ऊपर दोनों लग रहा है ना? ऐसे कर देते हैं. 3D से 4D में size increase करना चाहिए. 4D से 5D में similar size के increase होना चाहिए. Yes or no? Please tell me guys. है ना? क्योंकि 3D से 4D और 4D से 5D. Tell me yes or no. There should be a similar Yes, sir. increase when we move from 4D to 5D. But we don't see a similar increase in size when we go to 4D and 5D. In fact, 4D and 5D elements, they have almost similar atomic radius. Why is that? The reason is 5D से पहले we have 4f electrons. Is right? See here. In 5D series, the 4f electrons are already filled. And the screening of 4f is evenness. Okay. This leads to less increase in size of 5D elements, 5D series elements. ठीक है, तो जितना इंक्रीज होना चाहिए था उतना इंक्रीज होता नहीं. ठीक है, why is that? Due to the involvement of 4f electrons. 4f electrons, they have very poor shielding, and due to that poor shielding, what happens? The 5D electrons are not being shielded, and if they are not being shielded, that means proton will have more attractive forces. It will apply more attractive forces on the 5D electrons and it will pull it nearer, and when it is going to pull it nearer, the size is going to become small. Okay, so when I'm going from 4D to 5D, the atomic number is increasing very much, but the shielding is not there. Since the shielding is not there, what is going to happen? That positive charge is going to take in and it is going to reduce the size. Okay, this is important that 4D and 5D, they have similar sizes. What is the reason? दो चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा. एक चीज तो लिखना ही लिखना है, 4f इलेक्ट्रॉन की कम शील्डिंग इफेक्ट, 4f इलेक्ट्रॉन की कम शील्डिंग इफेक्ट, एंड दैट दिस कंप्लीट थिंग ना, जो आपका 5D सीरीज में साइज उतना बड़ा नहीं रहता है, दैट इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, बिकॉज 4f इलेक्ट्रॉन्स जो फिल हो रहे हैं, दैट आर द लैंथेनॉइड्स, 14 एलिमेंट्स ऑफ द लैंथेनॉइड्स. ओके, सो दैट इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ये आप लोगों को समझ में आया? ये सोनो प्लीज टेल मी. यहाँ पे आप ग्राफ भी देख लीजिए. See here, if you can see this graph, this red line, this is for 5D. Okay, this blue line, this is for 4D, and this green line is for 3D. आप लोगों को दिख रहा होगा कि 5D and 4D में कितना कम डिफरेंस है. Okay, and that is due to what? That is due to lanthanoid contraction. Is this clear? Yes or no? Please tell me, guys. Clear है सबको? हाँ या ना? ठीक है. If I am going from left to right in one series, if I am just looking at 3D series, then whatever reason you are going to give for the decrease in the size is because of the lower shielding of D. But when I am talking about 3D to 4D to 4D to 5D, 4D and 5D के बारे में जब बात हो रही है, तो this is lower shielding of 4F and साथ साथ क्या लिखिएगा? And lanthanide contraction. These are the important terms that you have to mention in the exam and your answer sheet to get marks.
ओके अच्छा, अब एक बात बताइए, एक सीरीज में आप लोग इस तरह से जा रहे हैं, स्कैंडिनियम टू एटलीस्ट निकल या जिंक तक आप मान लीजिए, ठीक है, जिंक तक ही मान लीजिए, इन जनरल बात कर रहे हैं। इन दिस केस एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, मास क्या हो रहा है बताइए, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? मास इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रॉम स्कैंडिनियम टू जिंक? टेल मी गाइस। Increase. इंक्रीजिंग है ना, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मास भी इंक्रीज करेगा। साइज क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? Decrease. डिक्रीजेस। तो डेंसिटी विच इज इक्वल टू मास अपॉन द वॉल्यूम, वॉल्यूम को आप साइज ले सकते हैं, तो डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Increase. वेरी Increase. हाईली, ठीक है ना, बहुत हाईली इंक्रीज होगा। ओके, सो इफ दे आस्क यू व्हाई द डेंसिटी ऑफ 3D series, 4D series or 5D series, it increases if I go from left to right in a series, then you will say because due to the increase in mass as well as the decrease in size, density of these element increases as we go from left to right. Is this clear? Yes or no? Please tell me guys. Yes, sir. सबको clear है? Okay. Let's see next. यहाँ पे देखिए इन्होंने पूछा हुआ है why do transition element exhibit higher enthalpies of atomization? क्यों higher enthalpy of atomization क्यों होता है? Because they have high number of unpaired electrons. जहाँ पे ज्यादा unpaired electrons होंगे, they will have stronger, same thing, stronger interatomic interaction and stronger bonding. Okay, so जब आपके पास enthalpies की बात आएगी तो आप किसको देखेंगे? number of unpaired electrons को देखेंगे। Similarly जब melting point की बात आएगी तब भी क्या देखेंगे? number of unpaired electrons को देखेंगे, D5 को छोड़ के, ठीक है, D5 को छोड़ के। Then here they have asked in the series scandium to zinc, the enthalpy of atomization of zinc is lowest. Zinc का lowest क्यों होता है? Because it has D10 and D10 रहेगा तो यहाँ पे ये it cannot move freely. Why? Because D10 should not be disturbed. D10 has also one more thing we can write is D10 has 0 unpaired electrons. Therefore delta H atomization is low. आसानी से इसको atomize किया जा सकता है. Okay. See next we have ionization enthalpy. Ionization enthalpy का मतलब क्या होता है guys? What is the meaning of ionization enthalpy? The energy required to remove the outermost electron. Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Yes. Hi, Anna. The energy required to remove the outermost electron. उसके लिए दो चीज डिपेंडेंट है ना, एक तो सबसे पहले कि पॉजिटिव चार्ज कितना जोर लगा रहा है, लाइक व्हाट इज द effective nuclear charge, and also the size. If you have an electron here and you have an electron here, then obviously this electron is easier to remove. Is that clear? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. नहीं है तो दोनों चीजें क्या हो रही हैं आपकी? The Z effective is also increasing if I go in a series like this. Yes or no? Z effective increase कर रहा है, proton number increase कर रहा है. Also the size क्या हो रहा है आपका? Size is decreasing. Yes or no? Hi Anna. Yes, sir. Hi Anna. Okay. That is why what is going to happen? There will be an क्या होगा बताइए? डेल्टा एच आई आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? टेल मी. More. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? इट इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है, बट आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी या फिर आपका बहुत कम इंक्रीज करेगी. सो हियर यू हैव टू सी अबाउट व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन दैट इज बीइंग रिमूव्ड. वी रिमूव ऑलवेज द 4s electrons. Yes or no? We always remove the 4s electrons. And who is shielding the 4s electron? Who is shielding the 4s electron? We have 3D subshell which is shielding the 4s electron. Is this clear? Yes or no? Please tell me first of all. Yes, sir. Okay. Now, when the 3D subshell is going to shield the 4s electron, it is not going to shield it very effectively. ठीक है, it is not going to shield it. एक सेकंड. 3D इलेक्ट्रॉन्स अपने एक दूसरे को क्या करते हैं? It is not going to shield more effectively. इसका मतलब these 3D electrons don't get much
Z effective from nucleus. They do not get much positive charge from the nucleus because they are in 3D. But 4s जो है आपका क्या है, it is near to nucleus, and since it is near to nucleus, the ionization enthalpy is not very high. ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करता, स्लाइटली इंक्रीजेस ओनली, बट इट इंक्रीजेस. ठीक है, ये नियर टू न्यूक्लियस से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा निकालना, राइट. इस वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, स्लाइटली इंक्रीज करता रहेगा. तो हियर यू राइट, सी ionization enthalpy increases only slightly along the 3D series. Okay, now let's look at the next thing about second ionization enthalpy. जो second ionization enthalpy है उसमें हम लोग क्या देखते हैं. So obviously if you have M to M plus और M plus से अगर आप M2 plus जाइएगा, so obviously this is going to be more difficult. Yes or no, please? Yes, sir. है ना, this is going to be more difficult. So the general trend of increasing values of second ionization enthalpy is expected as effective nuclear charge increases, and because one d electron does not shield another electron from the influence of nuclear charge, because d orbital different direction. ठीक है. So first thing is that because we are going from M plus to M2 positive, then that is expected to increase, right? It is expected to increase because we are going from M plus to M2 plus. अब अगली चीज जो है second and third ionization enthalpy के बारे में, so it depends on the, please see, इसको ध्यान में याद रखिएगा. Stability of various oxidation state depends on the electronic configuration. ठीक है, D0 हो, D5 हो, and जब D10 हो, these are very stable. ठीक है, इसके हिसाब से आपके पास ना एक दो सवाल आते हैं, उनको हम लोग करके देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. इफ आई हैव Mn पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए, इफ यू हैव Mn पॉजिटिव, Mn पॉजिटिव से आपको जाना Mn2 पॉजिटिव. ठीक है, और दूसरा केस है क्या आपका, आपको जाना Cr पॉजिटिव से Cr2 पॉजिटिव. ठीक है, एंड दे आर आस्किंग विच इज गोइंग टू बी मोर इजी, है ना. आप यहाँ पे बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी Mn positive to Mn2 positive, what is the electronic configuration of Mn positive? Electronic configuration of Mn positive, what is the atomic number of magnesium, sorry, what is the atomic number of manganese, what is the atomic number of 25. ठीक है, 25 है. Mn positive, you remove one electron, it will be what, 4s2, 3d5 से 4s1, 3d5. What about Mn2 plus, यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? Tell me, what will be the oxidation state here in Mn2 positive? Yes, it will be 3d5. What about Cr positive? Cr positive में क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? 4s0 3d5. And Cr2 plus में 3d4. बताइए कौन आसान होगा? टेल मी, कैसे बताएंगे? देखिए, इज दिस स्टेबल, यस और नो, प्लीज टेल मी. 4s1 3d5 स्टेबल है ना, बिकॉज वी हैव d5 कॉन्फिगरेशन. स्टेबल है, हाँ या ना? Yes, sir. ये भी कॉन्फिगरेशन स्टेबल है, करेक्ट गाइस? यस नो, प्लीज टेल मी. Yes. Next thing, what about this Cr plus, this is stable, correct? Yes, sir. What about this 3d4, it is stable या unstable? Unstable. Unstable. तो बताइए, स्टेबल से अनस्टेबल विल बी डिफिकल्ट, राइट? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी इजी. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ Mn पॉजिटिव इज क्या होगा, लोअर होगा, बिकॉज आसानी से निकल जाएगा, इज लोअर देन
डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ Cr पॉजिटिव। क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. अब सिमिलरली आपके पास एक एग्जांपल होता है जिसको देखते हैं। इफ यू हैव टू गो फ्रॉम Mn 2+2 Mn3+, और दूसरा आपके पास एग्जांपल है Fe 2+2 Fe3+। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का, है ना, यहाँ पे Mn+2 से +3, Fe+2 से +3, एंड देन ऑल्सो राइट विच इज गोइंग टू बी हैविंग स्टेबल अनस्टेबल, और कौन सा इजी और कौन सा डिफिकल्ट होगा। कर लेंगे आप लोग, करके भेजिए हमें। ओके, ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज सेंड द आंसर। Mn2+ टू Mn3+, दूसरा केस क्या है, Fe2+ टू Fe3+। ओके कृष्णा, करेक्ट कृष्णा, वेटिंग फॉर अदर्स। व्हाट अबाउट अदर्स? किसी और ने नहीं भेजा, जल्दी बताइए। How many of you guys are having difficulty in writing the electronic configuration of Mn2+ and Mn3+, Fe2+ and Fe3+? Raise your hand. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किन लोगों को दिक्कत हो रही है? प्लीज रेज योर हैंड। तो किन्जा कंक्लूजन में भी लिख दीजिए किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, Fe का या Mn का? Fe2+ या Mn2+, which will be lower? किन्जा
Fe. Very good. Yes, Atif, correct. How many of you are having difficulty in which is going to be easy? Akshay, which is going to be easy? How many of you are having difficulty in writing the electronic configuration? Please raise hand. Please raise your hand if you're having difficulty in writing the electronic configuration. किसी को नहीं हो रहा. Donna, tell me what is the electronic configuration of Mn2 plus? Donna, please turn your mic on and tell me what is the electronic configuration of Mn2 plus. So I'm not sure. तो फिर आप हाथ रेज कीजिए ना. I was asking So I Donna. can't raise my hand. You cannot don't raise know your how to hand. do it. You do not know how to do it. I think it is Alt Y ना, हमजा. तो डोना आप माइक ऑन करके बोलिएगा ना कि सर आई कैन नॉट रेज माय हैंड बट आई हैव डिफिकल्टी. आपसे स्पेशली पूछना पड़ रहा है. डोना, यू हैव फोन और लैपटॉप? डोना, Laptop. press Alt and Y if you have Windows, I guess. Alt and Y. Okay. Got it? ठीक है. तो अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर पूछिए. ठीक है. What is the atomic number of Mn? Tell me. Atomic number. Atomic number. What is the atomic number? अगर आता है तो बताइए, नहीं आता तो डोंट नो बोलिए. Yes, Donna, what is the atomic number? I think it is 25. Yeah, that is correct. Okay. ठीक है. तो प्लीज रिमेंबर, एक्सेप्ट क्रोमियम एंड कॉपर. ठीक है. एक्सेप्ट क्रोमियम एंड कॉपर, यू कैन यूज दिस ट्रिक of writing electronic configuration. You will write 4s2 3d5. You see the trick? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. What is the trick? The 2 and the Right. 5. Is है that? ना, 2 and the 5. Similarly, chromium and copper को छोड़ के लिखो. Okay. Chromium and copper has exception. ठीक है ना. Fe का होता है 26. क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. प्लीज रिमेंबर. ठीक है ना. You have 1s2 2s2 remaining there. Outermost electronic configuration will be, बोलिए. 4s2 3d 6. ठीक है. Okay. So Mn2 plus will be having how much? You will remove how many electrons for Mn2 plus? 1. ऐसे कैसे? एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा ना. डोना, देखिए ऐसे होता है. Mn will have how many protons? Tell me. Keep your mic on. Keep your mic on. Mn will have how many protons? How many protons? How many protons? नहीं पता? अरे मार खाइएगा आप. डोना, how many protons? 2. 2 प्रोटॉन. अरे नहीं भाई, 25 प्रोटॉन्स ना. क्या हो गया डोना? हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. कुछ कुछ बच्चों को होता है 11th क्लास जिन्होंने नहीं ठीक से पढ़ा रहता है, उन लोगों को नहीं ध्यान रहता. ठीक है, कोई बात नहीं आता तो. नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. ठीक है डोना, कोई दिक्कत? याद रहेगा ना? हाँ ठीक है, वेरी गुड. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन Mn? 25. Very good. What is the number of protons in iron? And 26. हाँ, इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? You don't know Fe is iron. आपको नहीं पता है? I know. हाँ, I had a confusion. you know ना. क्या confusion है आपको? बताइए क्या confusion है? You cannot explain the confusion, है ना? No, I can't. बस I यही can't. confusion होगा. I didn't think हाँ. quickly that Fe is iron. Okay. अच्छा ठीक है. You have 25 protons का मतलब positive charge. Keep your mic on, Donna. Yes, sir. Okay. You have 25 protons.
Now, for this manganese to be neutral, if it does not have any charge, that means it will also have 25 electrons. Yes or no? Yes. है ना? पॉजिटिव और नेगेटिव हाँ. ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे. करेक्ट? डू ना? Yes. Okay. Now, see, if I will remove one electron, okay, this is your Mn. If I remove one electron, this will be Mn positive. What will be the charge? कैसे हम लोग देखेंगे? If I am removing electron, the number of proton is same, but the number of electron, this is positive, and number of electron becomes 24. If I have removed one electron, yes or no? Yes, sir. So we have 25 positive charge and 24 negative charge. क्या हो जाएगा? 25 minus 24 is equal to what? Plus 1. 1. Correct? Yes. Similarly, if I remove another electron in manganese, I will have 25 positive charge as it is. Proton, we are not touching the proton, we are only removing the electron. The number of electron is 23. So this will have what charge? Tell me. +2. +2. So जब आपके पास +2 charge है, that means how many electrons have we removed? We 2 have removed electrons. 2 electrons. When we have +3 charge, then how many electrons have we removed? 3 electrons. 3 electrons. Very good. And you tell me, this is the third shell, and this is the fourth shell. Okay? What do you think? Which electron is easier to remember? Sorry, which electron is easier to remove? The third or the fourth? Here is your positive charge. The third one. Why third one? Third one में तो ये Because ज़्यादा it's- attraction होगा ना? Which will have more हाँ. attraction? Third one or fourth one? Tell me. Which will Third have more one. attraction? Third one will have more attraction, so it will be difficult or easy to remove the third one. It'll be difficult to remove. So fourth one will be easy to remove. Yes or no? Yes. ठीक है. So which electron should we remove? The 4s or the 3d? 4s. ठीक है. Because it's So easier to remove. वेरी गुड. समझ में आ रहा है? आप तो बोलिएगा Yes, नहीं ना. sir. अगर तो ऐसे हम हर दिन नहीं पूछेंगे ना आपसे. अभी तो पता चल गया हमको, है ना? नहीं तो आपको एटॉमिक नंबर नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा, तो बताइएगा तब तो होगा. ठीक है. Yes, sir. डाटा हमने आपको, हाँ, Yes. हमने डाटा आपको. कहाँ डाटा आपको? कुछ नहीं डाटा है. No, no, no. हाँ, यहाँ पे देखिए, Mn2 plus, so you will remove the 2 electrons from 4s and this will be what? 3d5. Is it stable or not stable? It's stable. कैसे stable है? स्क्रीन पे कहीं पे दिख रहा है? देखिए यहाँ पे D0, D5 and D10. D5 is stable, right? Stable, हाँ stable. Mn3 plus में क्या होगा? Mn3 plus 3 electrons are removed. हाँ, so you It will won't be remove 2 stable. electrons from 4s. अरे भाई मेरे वैसे नहीं. Configuration लिखिए पहले ना. What will be the configuration? 4s2. 4s2 तो निकाल दिया ना हमने. 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको. Okay. हाँ, बताइए. So it'll be 3d5. एक एक करके बोलिए. सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालिएगा? You will remove the first electron from what? 4s or 3d? 4s because it's easier to remove. How many electrons have you removed till now? 1. You will One, remove yeah. another electron from where? Tell me. From I don't know. You don't know. ठीक है. फिर से ट्राई करते हैं. ठीक है. Okay. Fresh mind. You're Mhm. you're having a focus ना? Focus नहीं बिगड़ रहा है Yes, आपका ना? yes. ठीक No, है. no, no. Okay. So 4s has how many electrons? 2. 2 electrons. Yes. How many electrons do we need to remove for We Mn3 need to plus? remove 3. 3. So you remove the first electron from 4s. Correct? एक इलेक्ट्रॉन Yes. आपने निकाल लिया, तो it will become 4s1, है ना? If you Yes. remove one electron, you can remove one or more electron from 4s. Yes or no? Yes, you can remove 2 electrons from 4s2. So now 4s will become 0. तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालिएगा? In From where will you? 3d5. So you will have 4s0 and 3d 3d4. stable or not stable? Not stable. ठीक है. Fe2 plus देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Can you see the electronic configuration in this screen? Yes. 4s2, 3d6. Fe2 plus will be what configuration? Tell me. Fe2 plus remove 2 electrons. 2 electrons, so it'll be 4s0 and 3d6. Fe3 plus में क्या होगा बताइए? Fe3. Configuration. Oh, 3 plus, no? 3 plus. So 3d5 again.
It is stable though. It is stable. तो ये आपका stable से unstable जा रहे हैं आप. In the first case for Mn, where this is stable and this is unstable, right? Yes. And here this is unstable and this is stable, right? Yes. So what do you think? Which is difficult? Stable to unstable or unstable to stable? What do you think? Difficult. Difficult कौन सा होगा? Unstable to stable. Unstable से stable तो जाना आसान है ना? हाँ, Oh, बताइए. stable to unstable. समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है ना Yes. क्यों आसान है? Yes. Mm-hmm. ठीक है. So tell me which is easier, first one or second one? First one. First, which one is easier? Easier. Easy. आप याद करने की कोशिश कर रही हैं कि हमने क्या बोला था. ठीक है, वो मत कीजिए, आप लॉजिक लगाइए ना. Okay. Easier to change would be देखिए, unstable to stable. ठीक है, सही कहा आपने, लेकिन हम आपको ना एक एग्जांपल दे देते हैं जिससे आप लोग को याद रखिएगा. Okay. Tell me which is stable, 1 or 2? बताइए, which is more stable, the first position or the second position? नहीं पता तो नहीं पता बोल दीजिए. हम Okay, पूछेंगे I फिर. don't know. हाँ, आप फर्स्ट पोजीशन में बॉल को रखिएगा तो अपने आप 2 पे चला जाएगा. So could you repeat that? If you keep the ball in the first position, will it move to the second position on its own? No. If you keep the ball in the second position, will it move to position 1 on its own? Yes. So which is more stable? Tell me. कहाँ पे वो आके रुक जा रहा है? Where it is not moving. Stable तो वही चीज हुआ ना जो कुछ हरकत नहीं कर रहा है, which is would not be not more moving. not moving. So it will be more stable, right? यहाँ पे More आके stable, yeah. it has gained stability in the first position, right? It is not going anywhere. This is stable and this is unstable. Tell me, Okay. which is easier, to move 1 to 2 or 2 to 1? Which one is easier? 2 to 1. 2 to 1 ना, तो हमेशा unstable से stable will be easier. याद रहेगा? Okay. नहीं याद रहेगा तो बना के समझ लीजिएगा फिर से दोबारा, ठीक है ना? Okay. So here we can write, no problem, Fe2 plus unstable से stable will have lower delta Hi than Mn2 plus. Okay, so if they ask you ना why, तो आप इस तरह से बता दीजिएगा, ठीक है? This is stable, this is unstable, this is unstable, this is stable. Okay, Do so we the have teacher to will show understand. like the configuration and Configuration and all. Yeah, you have to Okay. show the configuration. If they're asking why, if they're just asking which will be having lower, तो बस आप लिख दीजिए वहाँ पे. But if they're asking also why, then you write the configurations also. Is this clear? यार आप तो सबको Yes, sir. समझ में आ गया होना चाहिए. चलिए. From here, the oxidation state, in oxidation state, you will be asked like which is having the most stable, the most number of oxidation state and why. So first thing is that why do they show variable oxidation state? They show variable oxidation state due to participation of Ns and N-1d electrons. ठीक है? That is why they show variable oxidation state. And as we have more number of unpaired electrons, the number of variable oxidation state, it also increases. So manganese has the highest number of oxidation state, from +2 to +7. Okay. Now, इसमें एक point is important, that is about इसमें नहीं है. अच्छा हाँ, ये दोनों को ना याद कर लीजिएगा प्लीज. You have scandium and zinc. Both of them, they do not show variable oxidation state. They only show one oxidation state. Okay, this is important. Scandium and zinc.
and it is not in this position. So okay. Now trends in the standard electrode potential. This is important. What is standard electrode potential? We have done electrochemistry, so we know that standard electrode potential is what? Standard reduction potential. Okay, it is what? Standard reduction potential. Now, हम लोग SRP नहीं समझेंगे, ठीक है ना? I'm first of all telling you, we will talk only about SOP, and whatever conclusions we are drawing from SOP, we are going to reverse it to get the conclusion for SRP. Does this make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. ठीक है ना? Because Yes, देखिए SRP अगर आप कीजिएगा ना, तो SRP में you will have Mn positive giving you metal, है ना? This is completely what I can say. It is not very intuitive. Okay, this is not very intuitive that the metal plus ion it is going to metal. Intuitive क्या होता है आपके लिए? ये metal से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, so what is going to happen? Mn positive, and this is oxidation. So this is quite intuitive. That is why we will talk only about SOP. Then whatever conclusion we are having, we will reverse it to get about SR. Okay. Now, first of all, when we have standard electrode potential, so we don't go from metal to Mn positive, we go metal solid to Mn positive aqueous. So there are multiple steps to this, even though it happens instantly, but from the perspective of calculation, we don't have anything, we don't have what is the energy release or required for this process, but we can divide this process into different steps. In the first step, what I'm going to do, I'm going to do delta H atomization. So I will get metal in gaseous state. Now from gaseous state, I can calculate the ionization enthalpy, because ionization enthalpy is defined as the amount of energy required to remove the electron from the outermost shell of a isolated gaseous atom, neutral isolated gaseous atom. Okay, so if we do not have metal in gaseous state, we cannot calculate the ionization enthalpy. So that is why, first of all, in gaseous state, then Mn positive, this will be the delta H ionization. If you have M positive, that means only one electron is removed, that will be first ionization enthalpy. If it is Mn positive, Mn2 positive, or rather metal 2 positive, then it is going to be the second ionization, first and second ionization enthalpy, and so on. Now this is delta Hi, and then I am going to hydrate it. Then I'm going to add water to this positive charge, so I will get delta H hydration. I will get delta H hydration. Now the first process, that is delta HA atomization, this is going to release energy or require energy? Tell me, guys. If I am going from solid to gas, that will require energy, yes or no? ये बताइए आप. हाँ या ना? Metal, sorry, solid to gas, it will require energy, yes or no? Yes, sir. इतना टाइम कि कोई हाँ ही नहीं जवाब दे रहा है. If you want to move from solid to gas, will it require energy? हाँ या ना? Yes. Anyone has any doubt in this? Tell me. I hope this is very logical ना, कि solid से gas में आपको heat वेट देना पड़ेगा, कम से कम इतना तो सोच सकते हैं आप लोग. Now, if something requires energy, that means I have to give the system some energy. So I am giving the system energy. If I am giving the system energy, the change will be positive. तो उसमें क्या होगी? एनर्जी बढ़ जाएगी. बढ़ने का मतलब क्या? पॉजिटिव. Energy of the system will increase in the first process. In the second step, that is delta H ionization, what is going to happen? If I have a positive charge here and I'm going, there is an attractive force here, and I want to remove this electron, that is ionization enthalpy, right? That you have an electron and that you are removing from the influence of proton. Now this will require energy, yes or no? Please tell me. Yes, sir. This will also require energy, so this will also be positive. Next thing is we have delta H hydration. What is delta H hydration? When you put Mn positive in water molecule, oxygen atoms which are having higher electronegativity, they get delta negative charge. So these interact with Mn positive, and when they are going to interact with Mn positive, they are going to have attractive forces, yes or no? Please tell me, guys. This is attraction, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. This is attraction, and whenever you have attraction, there is a release of energy. So delta H hydration will be negative.
delta H hydration is going to be what? Negative. Okay. Now, atomization is positive, HI is positive, delta H hydration is negative. Now, this for generally most of the metals, atomization is very high. Okay, na? Because it is hard and all, you have to convert solid to gas. It is very high. You can also think that. But metal has a tendency to lose electron. That is why ionization enthalpy is not very high. Okay, please remember that. Metal has a tendency to lose electron. That's why ionization enthalpy is not very high. But the enthalpy of hydration is very highly negative. You have positive charge ion in water. Now, water is very happy because it is having attractive forces with positive charge. So this hydration enthalpy compensates for the delta H of atomization. And that is why, and therefore, M solid to Mn plus aqueous, this generally is what? This generally, the enthalpy for this is generally what? It is negative. That means SOP, please yaad rakhiyega. SOP will be what? It will be positive. Generally speaking, please remember, this is delta H. Delta H negative हुआ, standard oxidation potential will be positive. ठीक है? तो generally speaking, see, I'm saying, generally speaking, delta H of SOP of D elements or D metals is delta H क्या होगा? Wait a second. Delta H of oxidation of D metal is negative. Therefore, SOP is positive. And if SOP is positive, SRP will be what? Tell me, guys. Positive Negative. Negative. यानी कि standard electrode potential will be negative because SRP is equal to SOP only. Sorry, SRP is equal to SE. Is that clear? Yes or no? Please tell me, guys. Generally speaking, delta H of oxidation of D metal is what? Negative because of high hydration energy. This is due to high delta H hydration. ठीक है? Due to delta H hydration. Please remember, delta H hydration is the main point. Delta H hydration is the main point. Whenever, for example, in chapa elements, you have to remember just for copper. For copper, SRP is positive. Why it is positive? You will say because of what? Because delta H hydration is not very high. तो यहाँ पे आपके पास ये एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है. आई होप आप लोगों को ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया. तो आप जब पढ़िएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा. सी the unique behavior of copper having positive standard electrode potential accounts for its inability to liberate H2 from acids. ठीक है? This is for wait, not this part. This part. The high energy to transform copper to copper 2 plus is not balanced by its hydration enthalpy. ठीक है? तो क्या है आपके पास? देखिए, कॉपर को कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट. कॉपर टू कॉपर 2 प्लस. व्हाई इट इज डिफिकल्ट? बिकॉज कॉपर हैज व्हाट? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सॉरी, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29. Dona, what will be the electronic configuration? Tell me for copper. 29, so 4s2 and 3d9. बहुत बढ़िया. हमें क्या कहा था? कॉपर और क्रोमियम को छोड़ के ना, बोला था कि नहीं बोला था? है ना? ये याद रखिए. तो कॉपर में इट हैज डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये तो गुना है ना जो आप लोगों के the sins of your 11th standard 4s1 3d10. ठीक है? तो कॉपर विल बी 4s1 3d10 stable because 3d10. कॉपर 2 प्लस क्या होगा? 4s0 3d9. So this is unstable. So this will be what? Difficult. वही लिखा हुआ है. This is the line. They will ask you why the standard electrode potential of copper is positive. But generally क्या होना चाहिए? Negative होना चाहिए. Right? The high energy to transform copper to copper 2 plus is not balanced by its hydration enthalpy. Clear है सबको? हाँ या ना? जल्दी बताइए सबको.
Is this clear for copper? Yes or no? Please tell me. Yes. ठीक है, मेन थिंग जो आप लोगों को याद रखने की चीज है, जो यहाँ पे नहीं है उतना साफ से लिखा हुआ, दैट इज दिस पार्ट. Atomization, ionization and hydration are the three things that defines or dictates the standard electrode potential. अच्छा, अभी तक जो हम बात कर रहे थे, we are talking about copper to copper 2+. ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा सवाल है, this one, Cr2+ is reducing, but Mn3+ is oxidizing agent. Why? ठीक है, so Cr2 positive, it is going to have, both are going to have D4 configuration. ठीक है, दोनों में क्या होगा, D4 configuration होगा. सबसे पहले आप ये बताइए, Cr2+ is good reducing agent. That means it is getting easily oxidized. ये कितने को समझ में आया? Please raise your hand. If Cr2+ is reducing agent, that means it is going to get easily oxidized. कितने लोगों को याद है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से? रेज योर हैंड. हाँ, हम बताएं, आप पूछें हम. चलिए, who will explain this? Raise your hand. Keep your hand raised if you want to explain this. बस जिन लोगों ने हाथ हटा दिया उन लोगों को नहीं पता क्यों नहीं है ना, बस याद है, आप लोग ध्यान रखिए. आप किसी को नहीं पता किसी को नहीं पता, सबने हाथ हटा दिए, किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है. अच्छा, हम नहीं बोलेंगे एक्सप्लेन करने के लिए. रेज योर हैंड इफ यू कैन एक्सप्लेन इट टू योरसेल्फ ओनली, कि मतलब क्यों है ऐसा. ये भी नहीं है याद किसी को, सब भूल गए. अरे प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, रिवाइज करना. ठीक है, नेक्स्ट एटलीस्ट फ्राइडे को सोल्यूशन है, सोल्यूशन रिवाइज कर लीजिएगा. ओके, क्या है चैट में मैसेज? सर, लाइक रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन. डोना, यू नो दिस? हाँ या ना? सच सच बताइए डोना, यू अंडरस्टैंड दिस? व्हाई? If something is a good reducing agent, that means it will get easily oxidized. Something I understood. Something, मतलब ये ऐसा कुछ ना पहले हमने सुना है, बस ये आपको अंडरस्टूड का क्या मतलब? Like I don't बस know how आपने to सुना हुआ है explain it. ना आपको. You don't know that. Okay, this is for everyone, but see, I gave an example of some agent, right? What agent I used to give an example of? Tell me. All of you know travel agent? हाँ या ना? All of you know travel agent? Yes or no? Please tell me. No, sir. Yes. नो नो, कौन बोल रहा है ट्रैवल एजेंट के बारे में? ट्रैवल एजेंट नहीं पता क्या होता है आप लोगों को? अरे जो आपको टिकट्स विकेट्स बुक करके देता है, जैसे मान लीजिए आपको जाना है मालदीव्स, है ना, तो मालदीव्स जाना है तो आप लोगों को तो नहीं पता ना कि मालदीव्स में कौन सा होटल है, मालदीव्स में कौन सा टिकट सस्ता मिलेगा, मालदीव्स में हम कहाँ कहाँ घूमे. ट्रैवल एजेंट्स होते हैं. ट्रैवल एजेंट क्या करते हैं, आपको पूरा आइटनरी पैक करके दे देते हैं. ठीक है, तो क्या ट्रैवल एजेंट खुद ट्रैवल करता है, हाँ या ना? ये बताइए आप लोग. ट्रैवल एजेंट का काम खुद ट्रैवल करना तो नहीं है ना, दूसरों को ट्रैवल कराना. इज दैट राइट? यस और नो? प्लीज टेल मी. Yes, sir. So what is the work of travel agent? वो दूसरों को ट्रैवल कराता है. तो reducing agent क्या करेगा? It is going to reduce others. What it is going to do? It is going to reduce others. तो Cr2+ के साथ जो अदर है, अदर हो गया क्या? रिड्यूस. एक चीज जब रिड्यूस होगी तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, बताइए? समथिंग इज ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी. इतना समझ में आ रहा है सबको, हाँ या नहीं? ये कब से बता दिया. Yes, sir. Yes, sir. Reducing agent, it will reduce other, and if the other is getting reduced, Cr2+ is going to get easily oxidized. Oxidize करते हैं, है ना? ये क्या बोल रहा है? Reducing agent तो बोल दिया उसने, लेकिन ये क्या कह रहा है? आप क्या करें? You will do this Cr2+. तो ऑक्सीडाइज कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको? Cr. Tell me guys, what are you going to get if you are going to oxidize it?
Cr ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? कुछ नहीं याद, कुछ नहीं याद है ना सर यार को? 3+. रिड्यूसिंग एजेंट सही लिखा है कि नहीं? सही लिखा है, हमें लगता है सही नहीं लिखा है. Cr2 plus is reducing agent, ठीक लिखा है हमने. It is going to get easily oxidized. Oxidized का मतलब Loss of electron. तो क्या हो जाएगा? Cr3 plus. ठीक है. What is the configuration here? Cr2 plus में configuration है 3d4, हाँ या ना? Yes sir. और यहाँ पे क्या है? 3d3. यानी कि if it is getting easily oxidized, that means it is stable. Why it is stable, ये बताइए आप लोग. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक कंसेप्ट है यहाँ पे, जस्ट आपको हम बता दें. 3d3 है फिर भी स्टेबल है. क्यों? 3d3 है फिर भी स्टेबल है. वाई? एक दो मिनट देंगे आप लोग को सोचने के लिए. नहीं याद? देखिए, जब आपके पास Cr3 प्लस होगा, ठीक है, अब ये बताइए 1 2 3, T2G3 होगा. दिस इज हाफ फिल्ड, दैट इज व्हाई इट इज स्टेबल. ठीक है, सो दिस इज द आंसर दैट यू आर गोइंग टू राइट. आप लोग के लिए स्टेबल क्या क्या हो गया? इफ यू हैव एन आयनिक स्पीशीज D3 D6, so D3 will be stable. Why? Half filled T2G. D6 will be stable. Why? Half filled EG. याद रहेगा सबको? हाँ या ना, जल्दी बताइए. Yes or no, Yes. guys? Please tell me. Okay, please remember this. Next case is what? Mn3 plus है शायद. Mn3 plus is oxidizing agent. This will be easily reduced. That means Mn3 plus से Mn2 plus. So Mn3 plus will be what? D4, and Mn2 plus will be 3d5. 3d5 क्यों stable है? Because half filled d orbitals. ठीक है, please remember this. Okay, next आपके पास दिस इज Mn3 प्लस और Mn2 प्लस वाला है. तो ये जो अभी हमने बता ही दिया आपको, ठीक है ना. Mn3 प्लस वाला मेटल का 3 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी Cr का 3 पॉजिटिव चार्ज वाला है. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी सेम थिंग्स. आप इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके, नाउ स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे आपके पास मेन एक जो लाइन है वो ये है. द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन to stabilize the higher oxidation state exceeds that of fluorine. ठीक है, so fluorine तो क्या करता है? Fluorine stabilizes higher oxidation state, but oxygen is even better. Why is oxygen even better? Because it can form p pi d pi multiple bonds with metal. ठीक है, प्लीज इसको याद रखिएगा. मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है ऑक्सीजन, दैट इज व्हाई इट इज इवन मोर, इट एक्सीड्स द स्टेबिलिटी दैट इज गिवन बाय फ्लोरीन. ठीक है, प्लीज इसको याद रखिएगा. It can form p pi d pi multiple bonds. They will ask you that the highest oxidation state of manganese is +4 when it is bonded with fluorine.
The highest oxidation state of manganese is +4 when it is bonded with fluorine, but it is +7 when it is bonded with oxygen. Why? So you will answer because oxygen can form p pi d pi multiple bonds with the metal. That's it. ठीक है ना, ये याद रखिएगा आपको. So when oxygen have two bonds, ऑक्सीजन के पास क्या होता है? ऑक्सीजन जब आपके पास दो बॉन्ड फॉर्म करता है तो इसमें ऑक्सीजन के पास चार्ज क्या हो जाता है? -2. बट फ्लोरीन कैन हैव मैक्सिमम कितना चार्ज? -1. ठीक है, तो बहुत ज्यादा चार्ज हो भी नहीं सकता है इफ यू हैव फ्लोरीन. ये सवाल देखिए. This question here, how would you account for the increasing oxidizing power of the series? ठीक है. Now this is kind of real. ये आप लोग समझ लीजिए. आंसर तो आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही लिख दीजिएगा, लेकिन ये खास में कुछ समझ नहीं आता है आंसर बच्चों को. This is due to the increasing stability of lower species to which they are reduced. What does that mean? किसी को नहीं पता. अभी पता चल जाएगा, बट लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए. First of all, let us look at all of these three. Oxometals, है ना? So we have V, O2 positive, Cr2O7 2 negative, and we have MnO4 negative. ठीक है, हम फिर से बोल रहे हैं, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, बट आंसर में तो आप यही लिखिएगा. ठीक है, बोर्ड्स में आएगा तो आप आंसर यही लिखिएगा. ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिखने में चले जाइएगा. ठीक है, पता नहीं टीचर को भी समझ नहीं आया. बस यहाँ पे देखिए, VO2 positive. What is the oxidation state of vanadium here? Tell me, guys. What is the oxidation state of vanadium here? Hi, इतना time. What is the oxidation state of vanadium here? 5. 2 in 5 है, पक्की बात. Yes. ठीक है. What is the oxidation state of Cr here? Chromium. Oxidation state of chromium. 6. Oxidation state of manganese. Oxidation state of manganese. 7. Very good. अब यहां पे देखिए, वेनेडियम का +4, सॉरी वेनेडियम का +5. अच्छा, एक और चीज. When all of these are what? Maximum oxidation state of each metal. Vanadium का +5 से ऊपर जा नहीं सकता, because vanadium is what? 4s2 3d3. outermost जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, it has only 5 electrons outermost. 5 के अलावा तो और कुछ इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता ये. Similarly, chromium also has 1 electron in S, 5 electrons in D. In total 6 electrons. After losing 6 electrons, it cannot lose anything else. Similarly, manganese has 4s2 3d5, 7 electrons. After 7 electrons, it cannot lose any electron. Is this clear? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Is this clear? Yes, sir. That means +5 के आगे तो जा नहीं सकता, +5 के अब नीचे ही जाएगा, हाँ या ना? Yes or no, please tell me. Yes, sir. That means it will be, all of these are going to get reduced. They are going to get very easily reduced. Yes or no, please tell me. हाँ ना, जल्दी बताइए. अगर ये रिड्यूस हो जाएंगे खुद तो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, यही बताया है इन्होंने. क्या बोला है इन्होंने बोला कि these are good oxidizing agent, but we have also to tell why is MnO4 the best oxidizing agent. उसके बाद Cr2O7 2 negative, उसके बाद VO2 plus. It is because if you go and see what is the next oxidation state possible for VO2 positive, it is +4. ये देखिए आप लोग, VO2 के बाद VO2 5 के बाद देखिए +5 के बाद क्या है? +4 ही है, हाँ या ना? दिख रहा है आप लोगों को? यानी कि ये +5 से कहाँ जाएगा? +4 जाएगा. What about Cr? क्रोमियम जो था आपका +6 तो इसका था यहाँ पे, सॉरी, क्रोमियम was +6 here, but the next is what? +4, हाँ या ना? Yes. And similarly, Mn was +7, but next Mn का भी क्या है? +4 ही. Can all of you see that? Yes or no? Please tell me. Yes, sir.
है ना। तो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये सारे जो जा सकते हैं, इवन तो दे कैन गो इवन मोर फर्दर डाउन और ज्यादा स्टेबल हो ऑक्सीडेशन स्टेट, बट द नेक्स्ट जो आपके पास है सारे का सारा +4 है। वी हैव MnO4 नेगेटिव में जो डिफरेंस है दैट इज फ्रॉम हियर टू हियर। तो ये अनस्टेबल से काफी स्टेबल में चला जाएगा लाइक दिस। Cr में आपके पास क्या होगा, स्मॉल स्टेबिलिटी, एंड स्मॉलेस्ट स्टेबिलिटी विल बी व्हाट, फॉर VO2 पॉजिटिव, है ना। सबसे ज्यादा खुशी किसको है, MnO4 नेगेटिव हो, बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम +7 to +4। इट इज गोइंग फ्रॉम +7 to +4। इसी ये जो यहाँ पे लिखा है ना इन्होंने, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ लोअर स्पीसीज, है ना। तो +7 से +4 बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, +6 to +4 a bit of stability, +4 to +5 to +4 उससे कम स्टेबिलिटी। दिस इज इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ लोअर स्पीशीज टू व्हिच दे आर रिड्यूस्ड। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। आप लोगों को समझ में आया ये सुनो, टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। डिड एवरीवन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, यस और नो? Sir, can you explain once more? ठीक है, देखिए +7 चार्ज से +4 चार्ज में आपको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, या +6 से +4, +5 से +4 में? मान लीजिए आपके पास, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का तो मामला उल्टा है ना, अगर आपके पास ज्यादा चार्ज है तो क्या होगा, इट विल बी लेस स्टेबल, है ना। हम पैसों के मामले में आपको बता रहे हैं, आपको कहाँ ज्यादा खुशी मिलेगी, 4 से 5 में, या फिर आपको मिलेगी खुशी 4 से 6 में, या फिर आपको ज्यादा खुशी मिलेगी 4 से 7 में? बताइए, वेयर विल यू बी मोर हैप्पी? 4 to 7. तो उसी तरह मैग्नीज भी यहीं पे हैप्पी, ठीक है। Okay, sir. ठीक है, बट यू विल राइट द सेम थिंग, ओके। इसी आंसर को लिखिएगा बस आप लोग। अच्छा, इसमें आप लोग ना इनको याद रखिए प्लीज, दिस 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 दिस, ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, देखिए यहाँ पे स्कैंडिनियम +3 है और ग्रुप भी +3 है। PiO2 में इट इज हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर 4, ग्रुप इज आल्सो 4। +5 में वेनेडियम का इट इज हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट +5, ग्रुप इज आल्सो +5। +6 में 6, +7 में 7। एक सवाल है, व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट मैचेस द ग्रुप नंबर। तो ये सारे आप लोग को लिखने पड़ेंगे, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट इज द केमिकल रिएक्टिविटी। Okay. So next is the chemical reactivity of E0, and this is very similar to what we have learned in the wedding elements and chapa elements. Okay, so all the chapa elements, they cannot convert H+, they cannot liberate hydrogen from acids, but all others, all you guys remember this, yes or no? Please tell me, wedding elements and chapa elements. Yes, sir. है ना? So this does not happen in chapa, but H+ can be converted to H2 for all the other elements. Those who don't remember this, please go back and see the electrochemistry lectures. You will remember these things, the chapa elements and the wedding elements. In the chapa elements, the most important is copper. You will get most questions from copper only. Okay, so you will say that this is because of positive SRP या फिर SEP of copper, है ना? That is why it cannot liberate hydrogen in an acid. ये this one we have done already. Mn3+ and Mn2+ वाला couple, Cr3+ Cr2+ couple, and Fe3+ and Fe2+ couple. Okay, so this is we have done already. And जब डोना को बहुत समझा रहे थे हम ना, तो ये वाला एग्जांपल्स कर रहे थे हम लोग। This is there. Why is the highest oxidation state of a metal exhibited in its oxide or fluoride only? Because oxide and fluoride, both of them, they stabilize the higher oxidation state because they are very electronegative. Both oxygen and fluorine are very electronegative. That is why they can stabilize the higher oxidation state of metal atom. Then you will write oxygen can furthermore form p-pi d-pi multiple bonds to stabilize the higher oxidation state. इसमें आप सवाल को ये D5 के कॉन्फ़िगरेशन से कर लीजिएगा बिल्कुल आसान से, ओके, व्हिच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट।
then we have the magnetic properties. In magnetic properties, dia का मतलब no unpaired electron, para का मतलब you are going to have unpaired electrons. Okay, dia means no unpaired electrons, para means you will have unpaired electrons. And then there is another word that is known as magnetic moment. Magnetic moment is equal to mu is equal to what? Under root n into n plus 2. Okay, so these are some things I hope all of you know already. Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. These definitions and magnetic moments you must be knowing from the coordination compound chapter. Okay, now there is another thing which is ferromagnetic, which is new. Now ferromagnetic substances which are attracted very strongly are said to be ferromagnetic. Okay, क्या है ferromagnetism? It is an extreme form of paramagnetism. That's it. Now see, iron is what? Iron is very strongly attracted because iron and manganese, all of them, they have 4 unpaired electrons, 5 unpaired electrons. That is why they are very highly attracted. Now, just a second, wait. Okay, now this line is kind of obvious only, that magnetic moment increases the magnetic moment, it increases with increasing number of unpaired electrons. Okay, so I don't have to explain these things very much, but just have a revision of these parts. Okay, the main part था आपका that was about oxidation state, stability of variable oxidation state. Those were important things. अब देखिए color of compounds, color of different ions, this is completely related to the coordination compound, because you can see the frequency of the light is absorbed is determined by the nature of ligand. Weak field होगा तो the frequency is going to be small. If it is a strong field ligand, then the frequency of the light is going to be high. I hope you remember this from coordination compounds. Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है ना? So this is very much related to coordination compound. Formation of complex तो पूरा ही वही है. Catalytic properties में you remember these things. First of all, why do they show catalytic properties? The answer is due to variable oxidation state. Next thing, you have to remember a few catalysts. Vanadium is used in contact process. ये directly पूछ लेते हैं, इस वजह से लिख दीजिए. Then you use iron. Then you use iron in Haber's process. Haber process याद आया आप लोगों को कुछ कि नहीं याद आया? You remember Haber's process? Nitrogen. Sorry. What अक्षय? My God, I cannot hear. Like बहुत ज़्यादा heavy आ रही है आपकी आवाज़, समझ में नहीं आ रहा है. Nickel is used as catalytic hydrogenation. अगर आपको याद हो ना, निकल हो गया, प्लैटिनम हो गया, एंड पैलेडियम हो गया, ये तीनों का हम किस तरह से यूज करते थे? H2 upon nickel, H2 upon Pt, H2 upon Pd. ठीक है ना? So these are known as catalytic hydrogenations, and these are used in catalytic hydrogenations. ठीक है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे हैं ऑलरेडी. ठीक है ना? It is present here. Interstitial compounds में interstitial compounds form कैसे होते हैं? For example, if you have metals in D elements, the D metals, if you get impurities, and impurities will be in the form of small metals, so small atoms such as hydrogen, carbon, and nitrogen. If they get inside, or as an impurity they get inside the D metal, those things are known as interstitial compounds. Interstitial compounds are also related to the interstitial interstitial impurity of solid state. अगर आप लोगों को याद हो तो interstitial defects क्या होता है? You have metal atoms here और एक हाइड्रोजन यहाँ बीच में आ गया,
साइट्स के बीच में इंटरस्टिशियल, दीज आर द डिफरेंट साइट्स, एंड साइट्स के बीच में एक हाइड्रोजन आ गया या कार्बन आ गया या नाइट्रोजन आ गया, सो दोज आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. Just remember, don't remember, but just revise these 4 properties of interstitial compounds. Then the formation of alloy में, you remember this part, that brass is formed by copper and zinc and bronze is formed by copper and tin. इन सब चीजों को please revise कर लीजिएगा. These are just facts. हाँ, this is important now. K2Cr2O7, KMnO4. Okay. I will tell you guys, most of the people they have problem in balancing the reactions. Okay, so आपके पास जो सवाल आएगा ना, it will be always within these. ये देखिए, ये सेक्शन है ना, what you have to remember, you have to remember 4 things. For K2Cr2O7, you have to first of all remember that Cr2O7 2 negative ये कन्वर्ट होता है टू Cr3 पॉजिटिव. इसको याद रखिए आप लोग. पोटेशियम डाइक्रोमेट है, दिस इज व्हाट, दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों ही चीजों के लिए आप इसको ऐड कर सकते हैं. Na2, वेट अ सेकंड, Na2Cr2O7 और K2Cr2O7. ठीक है, दोनों में क्या होगा, Cr2O7 2 नेगेटिव, and both of these are what, good, very strong oxidizing agent, and they will be converted to Cr3 positive. किसमें कन्वर्ट होंगे ये, to Cr3 positive. They are going to get converted to Cr3 positive. इसको याद रखिएगा हमेशा. Then iodide will be converted to iodine, sulfide will be converted to sulfur, Sn2 plus will be converted to Sn4 plus, Fe2 plus will be converted to Fe3 plus. ठीक है, now you tell me, अच्छा Fe का तो रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, this reaction is already given. Now you tell me which one should I explain. ये आपको याद रखना है, I नेगेटिव से I2 होगा, S2 माइनस से S होगा, Sn2 प्लस से Sn4 प्लस होगा, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस होगा, और उसके बाद Cr2O7 के लिए it will be converted to Cr3 plus. Now you tell me, should I show this reaction in detail, this reaction to third reaction or the fourth reaction? Tell me guys. फोर्थ नहीं है, फोर्थ तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. किसी इन तीनों में से बताइए किसको हम एक्सप्लेन करें, जल्दी बताइएगा जल्दी. Which one should I explain? Tell me guys. Iodide, sulfide, yes, Sn2 plus. Oh my God, इतना टाइम. Iodide. Iodide. Okay, यार कुछ बोल रहा है. Akshay is saying Sn. Raise your hand if you want me to explain Sn. अरे हाँ चलिए. Sn. ओके, आई थिंक Sn वाले ज्यादा हैं, हम एक एक्सप्लेन कर देंगे, दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है ना. यू कैन डू बोथ ऑफ देम, डोंट वरी. Remember always one thing, all of these are going to happen in acidic condition. ठीक है ना, सब किसमें होगा, acidic condition में होगा. क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस. What is the oxidation state of chromium here in the reactant? What is the oxidation state of chromium? जल्दी बताइए guys, what is the oxidation state of chromium here? What is the oxidation state of chromium in Cr2O7 2 negative? 6. And what is the oxidation state here? +3. Correct है, yes or no? Please tell me guys. हाँ या ना? Yes, sir. But please remember, तो इलेक्ट्रॉन कितना यूज होगा जल्दी बताइए. How many electrons will be used? How many electrons are we going to remove या फिर add, जो भी हो रहा है यहाँ पे, है ना. तो हम used ले रहे हैं दोनों का. हाँ, 3 नहीं हो रहा है यूज, यहाँ पे
6 यूज हो रहा है, ठीक है, ऑल ऑफ यू प्लीज 6 यूज हो रहा है, व्हाई? Because both of these chromium are in +6 oxidation state. One chromium will take 3 electrons, the other chromium will take 3 electrons. This will give you 6 electron in total for this reaction to happen. Is this clear? Yes or no? Please tell me. Clear है Yes, सबको? sir. किसी को कोई डाउट? First chromium is going to take 3 electrons. Another chromium is going to take 3 electrons. That means we are going to use how many electrons? We are going to use 6 electrons. ठीक है, इतना ध्यान में रखिए आप लोग. 6 electrons. Then we have Sn2 positive, say Sn4 positive. So here you have +2 and here we have +4. How many electrons are going to be used in this case? How many electrons are going to be used in this case? Tell me, guys. How many? 2. जोर से बोलिए, guys. Very good. Here we are going to use 2 electrons. First thing that you have to do is to balance the electrons. तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? We have to multiply 3 in this case. Yes or no? Please tell me. ये मल्टीप्लाई करेंगे ना? हाँ या ना? Yes, sir. बताइए. Yes, sir. ये मल्टीप्लाई करते हैं. Now you write both of these things. Now you tell me what is the charge here? 2 negative. यहाँ पे कितना चार्ज है? 3 Sn2 positive है, यानी कि 3 into 2 plus 6 charge है. What is the charge here? Tell me, guys. Due to Cr. What is the charge due to Yes, Cr? 6 What is the charge due to Sn? +12. Here we have total charge of 6 minus 2 plus 4. Here we have total charge of 12 plus 6, 18. Correct है guys? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes. हाँ ना, जल्दी बताइएगा. अब बताइए आप लोग, +4 को +18 कैसे किया जाएगा? कितना ऐड करना पड़ेगा +4 में? You have to add 14 more. हाँ या ना? Yes. तो 14H+ डाल दीजिए आप. अगर आपके पास 14 हाइड्रोजन है तो वाटर कितना हो जाएगा? 14 हाइड्रोजन है तो 7H2. दिस इज योर रिएक्शन. याद रहेगा? यहाँ पे +14 होगा, +14H+. समझ में आया कैसे करना है? अरे आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. आ गया ना? ठीक है, तो इस तरह से आप किसी को भी लेके ये कर दीजिएगा. जस्ट रिमेंबर दैट. एक बार कर लीजिए इस तरह से सारे रिएक्शंस को, सारे रिएक्शंस याद हो जाएंगे. इसी तरह से कीजिएगा, लेकिन ठीक है ना? ये छाप मत लीजिएगा प्लीज कहीं से भी. ओके, प्लीज डोंट कॉपी फ्रॉम एनीवेयर. डू इट स्टेप वाइज, तभी याद होगा आप लोगों को. एंड देन यू हैव द शेप्स आल्सो. तो आप शेप्स याद कर लीजिएगा, क्रोमेट आयन का, डाइक्रोमेट आयन का. ठीक है. सिमिलरली यू हैव द मैग्नेट आयन हियर इन द ग्रीन एंड द पर्पल. क्या डिफरेंस है दोनों में देखिए. There are बताइए क्या डिफरेंस है दोनों में. ये क्या है O आपका? minus ion. O minus ions are lesser in the purple. Here we have MnO4 2 negative. और ये क्या है आपका? MnO4 1 negative. Okay, Right. that is the difference here. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी अलग अलग होगा यहाँ पे. 4 2 8, 8 में से 2 गया 6. यहाँ पे गया 4 2 8, 8 में से 1 गया 7. ठीक है, सो +6 and +7, that is the difference. Okay. Then we have similar reactions. यहाँ पे देखिए, इन KMnO4 you have 2 types of reaction, acidic solution and basic solution. इन दोनों को क्या कीजिएगा ना, जिस तरह से हम लोगों ने अभी किया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टुक द मैग्नीज. ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए एक चीज आप लोग और देख लीजिए. Mn किस में कन्वर्ट होता है? Mn2 प्लस Mn2 प्लस Mn2 प्लस Mn2 प्लस Mn2 प्लस Mn2 प्लस. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है? Mn. इन बेसिक स्टेट इट इज व्हाट? MnO2. MnO2 का मतलब क्या? +4
+4 +4। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इन एसिडिक ठीक है, ये दोनों आप लोग को याद रखने पड़ेंगे, बाकी सारी चीजें आपके लिए आसान है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वी हैव दी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम आपको सच में बता रहे हैं, आप बस क्या क्या पढ़ के जाइए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा। सेकंड में यू आर गोइंग टू लुक एट द लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। बेसिकली आपको लैंथेनाइड कंट्रैक्शन एक पार्ट है, एंड बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड्स में डिफरेंस, ये चीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और केमिकल बिहेवियर, एक बढ़िया सा ऐसे बना लीजिएगा सबके डिफरेंसेस का। ओके, दैट इज इनफ फॉर योर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के पार्ट में बस इतना ही है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जिसको हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है। देन यू गेट सम वेरी टिपिकल डिस्क्रिप्टिव टाइप, नॉट डिस्क्रिप्टिव टाइप बट वेरी फैक्चुअल क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, लैंथेनाइड में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे स्टेबल होता है ना। यू हैव टू लर्न दिस एलिमेंट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, है ना। तो सीरियम है वो एलिमेंट। देन यू विल हैव वन मोर क्वेश्चन सच एज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका स्टेबल होता है। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन दैट यू विल गेट ऑलरेडी इन एनसीईआरटी, सो दोस क्वेश्चन आप उसको याद कर लीजिए। ठीक है, बट इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यू जस्ट नीड टू रिमेंबर the differences between lanthanoids and actinoids and the lanthanide contraction. Now your work will be, you have almost 38 questions in this NCERT exercises. So for those 38 questions you will require like 2 hours. ठीक है ना, 2 घंटे में सारे 38 questions हो सकते हैं। Okay, so I am giving you like 4 minutes approximately to each question. ठीक है, एक्सेप्ट आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले सवाल को आप बस देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, करके। नाउ आउट ऑफ दीज 38 क्वेश्चंस, इफ यू कैन नॉट डू एनी वन ऑफ देम, प्लीज लुक एट relevant portion in टेक्स्ट बुक। ठीक है ना, प्लीज गो बैक टू द टेक्स्ट बुक, जो कि आपको लग रहा है कि जो भी टॉपिक में हो सकता है वहां जाके उस पोर्शन को पढ़िए एक बार, एंड देन ट्राई टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अगर आपको नहीं मिला, देन फ्लो चार्ट में आपके पास नेक्स्ट काम है, क्लिक अ फोटो of that question and send it to me. इतना कर पाएंगे आप लोग, हाँ या ना, प्लीज बताइए। Yes, sir. ठीक है, सो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा कि आज 1 घंटे बैठ रहे हैं, कल 1 घंटे बैठेंगे। ठीक है ना, प्लीज वैसे मत कीजिएगा। डीएनएफ ब्लॉक के लिए एक बार बैठिए, 2 घंटे आराम से इत्मीनान से बैठिए, बिल्कुल फोन ये करके शायद साइड में रखें, टिक करते जाइए सवालों को इस तरह से, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तो पता ही नहीं कहाँ पे है, हमको बुक में भी नहीं पता कहाँ पे है। सर्कल कीजिएगा, बुक में तो पढ़ा, समझ में नहीं आया। इज दैट क्लियर? यस और नो, प्लीज टेल मी क्या करना है आप लोगों को।